Hello everybody and welcome here. Now we will discuss about light microscope. So light microscope is also called as optical microscope and it uses light to make an image of an object. Means कि light microscope में हम light का use करते हैं. क्यों यूज़ किया जाता है लाइट का? टू मेक एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ताकि ऑब्जेक्ट की इमेज को हम क्रिएट कर सकें या बना सकें. सो लाइट माइक्रोस्कोप इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप. In light microscope, we use light. Why we use light? To make an image. To make an image of an object. So types of light microscope. Now the first one is simple. It have two types. Light microscope is of two types, simple microscope, and the second one is compound microscope. So in simple microscope, single convex lens is used. In simple microscope, single lens is used. For example, magnifying glass. So simple microscope magnify object up to 10 times. सो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप में हम सिंगल लेंस यूज़ करते हैं, और सिंगल लेंस कौन सा? कन्वेक्स लेंस, राइट. सो इसकी एग्जांपल मैग्नीफाइंग ग्लास है. ये ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई कर देता है अप टू 10 टाइम्स. द सेकेंड वन इज़ कंपाउंड माइक्रोस्कोप. सो in compound microscope, more than one lens is used and it have good magnification power. In compound microscope कौन से lenses का use किया जाता है? One is objective lens and the second one is ocular lens. Ocular lens is also known as eyepiece lens, right? So its magnification power is 10,000 times greater than actual size of the image, and its resolution power is 250 nanometer. So in compound microscope, more than one lens is used. More than one lens is used. While in simple microscope, we only use one lens, right? That is convex lens. So which type of lens we use? One is objective lens. And the second one is ocular lens. Objective lens is placed near the sample or the stage, while the ocular lens is placed on the top of the microscope, from which we can able to see the image of the object, right? So the magnification power of compound microscope is, its magnification power is 10,000 times, while its resolution power is 250 nanometer. So the magnification power of light microscope is, here we discuss light microscope. So the magnification of light microscope, not compound microscope.
the magnification of light microscope is 1500x, while its resolving power is 0.2 माइक्रोमीटर। सो जो लाइट माइक्रोस्कोप है उसकी जो मैग्नीफिकेशन पावर है वो 15 टाइम है, वाइल इसकी जो रिजॉल्विंग पावर है वो 0.2 माइक्रोमीटर है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप होते हैं जिसमें हम 2 लेंसेज का यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव लेंस वाइल सेकंड वन इज़ ओक्यूलर लेंस। ओक्यूलर लेंस इज़ प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द माइक्रोस्कोप, जिससे हम वी कैन सी द image of the object which is very small and we are not able to see with the naked eye, right? And objective lens जो है which help in magnification, अगर किसी object की which help in resolution. If the objective lens clearly differentiate the distance between object or between 2 points, so we can say that this microscope have high resolving power. जितना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो क्लियरली डिफ्रेंशिएट करेगा, क्लियरिटी लाएगा इमेज में, उतना ज़्यादा हम कहेंगे कि ये माइक्रोस्कोप जो है इसकी रिजॉल्विंग पावर हाई है, राइट? सो लाइट माइक्रोस्कोप कैन differentiate or can distinguish object that is smaller than 0.2 micrometer. मीन्स कि वो ऑब्जेक्ट जो 0.2 माइक्रोमीटर से भी स्मॉलर है, लाइट माइक्रोस्कोप उसको क्लियरली विजुअलाइज करवा सकता है या क्लियरली उसको डिस्टिंग्विश करवा सकता है, उसके उनके इमेज में क्लैरिटी ला सकता है उस ऑब्जेक्ट की जिसका साइज़ 0.2 माइक्रोमीटर से स्मॉल है। Here bright field mean in light microscope we also discuss bright field microscopy. Bright field mean bright background. Bright background. So basically light microscopy में जो background होता है वो bright होता है. Why it is bright? Because here the light is used for to make an image of an object. सो इस केस में जो ऑब्जेक्ट हैं जो कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हैं या ट्रांसपेरेंट लाइव सेल्स हैं उनको हम विजुअलाइज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज इन ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी फॉर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वी स्टेन दैम, वी यूज डाई फॉर ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट आइदर इट इज़ लाइव और नॉट। सो वी स्टेन ऑब्जेक्ट फॉर क्लियर विजुअलाइजेशन बट वी कैन नॉट सी ट्रांसपेरेंट सेल बिकॉज क्योंकि जो बैकग्राउंड है वो हमारे पास ब्राइट है। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में हम स्टेन या डाई का यूज़ करते हैं। डाई या स्टेन का यूज़ क्यों किया जाता है? फॉर क्लियर विजुअलाइजेशन के लिए, टू सी द ऑब्जेक्ट क्लियरली वी यूज स्टेन और डाई। बट transparent live cell, but we cannot see transparent live cell. Why? We cannot see in through a bright field microscopy because here when we stain them, when we stain transparent live cells, so it will die. Death occur due to dye because it have a chemical. So transparent live cell we can't see through bright field microscopy. ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में हम जो ट्रांसपेरेंट लाइव सेल्स हैं उनका यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम उनको स्टेन करेंगे तो उनकी डेथ हो जाएगी, राइट? बट पिगमेंटेड लाइव सेल्स को हम क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं।
उनको क्लियरली कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं? बिकॉज ब्राइट फील्ड का मतलब है ब्राइट बैकग्राउंड। ब्राइट बैकग्राउंड है तो उस पर हम डार्क ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजुअलाइज करेंगे, इसीलिए हम स्टेन या डाई का यूज़ करते हैं। जब हमारे पास कोई भी सेल पिगमेंटेड सेल होगा मीन्स इट ऑलरेडी हैव अ कलर्ड सेल। सो कलर्ड लाइव सेल जो है जब हम उसका यूज़ करेंगे तो हम उसे इजीली ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के थ्रू देख पाएंगे, विजुअलाइज कर सकेंगे, क्योंकि दे ऑलरेडी हैव दे आर कलर्ड बॉडी। This is the source of light or halogen lamp. And this is the condenser lens. It gathered the light from light source and focus this light on the sample. Condenser lens, it gather light coming from the light source and it focus this light on the sample. This is light on which sample is placed, or we can say it is an object. So ray passes through them, and this is an objective lens. It magnify image and it clearly differentiate the points of an object. If objective lens clearly differentiate the points of an object, so we can say that this microscope have high resolving power. क्योंकि जितना ऑब्जेक्टिव लेंस क्लियरली विजुअलाइजेशन में हेल्प करेगा उतना हम कहेंगे कि उसकी रिजॉल्विंग पावर हाई है. सो above that ocular lens is placed. It is also called as eyepiece lens. And this is the eye, right? So हमारे पास ये जो है ये source है. This is the source of light, or we can say it is an halogen lamp. So light जो है वो coming from the source and the condenser lens, it gather light and fall this light on the slide. On slide the sample is placed. Light ray fall on the objective lens and it help in clear visualization. From that objective lens enlarge the size of the apparent size of the image but not the actual size of the image. So what does ocular lens do? Ocular lens जो है वो again enlarge करता है the size of the image. जितना कि ऑब्जेक्टिव लेंस इनलार्ज करता है उससे ज़्यादा ओक्यूलर लेंस इनलार्ज करता है अप टू दैट, सो जिसके थ्रू हम इमेज को देख पाते हैं. आई पीस लेंस जो है वो टॉप ऑफ द माइक्रोस्कोप होता है एंड फ्रॉम दैट वी आर एबल टू सी द अपेरेंट साइज ऑफ द इमेज जो कि इन लार्ज फॉर्म में होती है, राइट? सो दिस इज़ द डायग्राम, फ्लो डायग्राम ऑफ ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी. अप टू दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग.